आज जाजपुर व्यासनगर में दुईदिनिया अंतर्जातीय हस्तशिल्प सम्मेलन भर्चुआल उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। भाग ने भारत समेत 16टी देशर प्रतिनिधि 20 जन अंतर्जातीय कलाकार 50 रु ऊर्ध्व वक्ता हस्तशिल्प ओडिशा को ग्लोबल ब्रांड भाव स्थानित करने को प्रयास। बाहरी पारुनी समाधान पंथा रेसलर पुणी केन्द्र क्रीड़ा मंत्री अनुराग ठाकुर को आलोचना। अपराह्न 4टारे उत्तर प्रदेश गोंडारे सांबादिक सम्मेलन करिपारंती फेडरेशन सभापति ब्रिजभूषण। आज आंदोलनकारी दे पारंती एफआईआर। तृतीय दिन में पहुंची आंदोलन। यूक्रेन को अमेरिकार पुणी मेगा पैकेज $2.5 बिलियन सामरिक सहायता मिलिबो। स्ट्राइकर सांजुआ जान आवेंजर एयर डिफेन्स सिस्टम। सेपटे आणविक युद्धर पूर्व सूचना देले रूसर पूर्वतन राष्ट्रपति मेदवेदेव। आज जर्मनी रामस्टेन ने अमेरिका नेतृत्व में मित्र शक्ति राष्ट्र प्रतिरक्षा मंत्री मानक बैठक। भारतीय नौसेना रे राज करिबो बाहुबली। आसंता जनवरी 23 रे सामिल हेबो आईएनएस बागेर। फ्रांस रो मेसर्स नाभाल ग्रुप सहायता रे निर्मित सबमेरिन ने समस्त ट्रायल ले होइथिला सफल। 1973 रे सामिल होइथिला प्रथम वर्जन। विभिन्न ऑपरेशन ने देखाइछि करिश्मा। बेआईन क्रोमाइट और कोयला मौजूद अभियोग। भद्रक पुरीपड़ारे एसीएफ रेड 330 टन क्रोमाइट 15 टन कोयला 2टी 20 चकिया ट्रक गोटे जेसीबी जबत। चारि अभियुक्त अटक। उपयुक्त कागजपत्र दाखल करिपारि नथिबा सूचना। माइनस तापमात्रा रे थरुछि उत्तर भारत। जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड रे शीत लहरी जारी। विभिन्न स्थान में तुषारपात। उत्तराखंड जोशी मठ रे जोरदार बरफ वर्षा। जनजीवन प्रभावित। मनाली रे मनोरम परिवेश। बैंक लुटेरांक उपरे भारी पड़िले 2 लेडी कन्स्टेबल। लुट उद्यम बेले दुर्बृत्तों सह लढ़िले महिला कर्मचारी। बिहार सेदुआरी इलाकार 2 महिला कन्स्टेबल बहादुरी को नहीं चर्चा। सोशल मीडिया रे वीडियो वायरल। जूही कुमारी शांति कुमारी साहस को सबुठी प्रशंसा। हॉकी महाकुंभ रे चली टक्कर। आज राउरकेला बिरसा मुंडा रे खेल 4टी मैच। दिन गोटाए दक्षिण आफ्रिका और ऑस्ट्रेलिया मध्य लड़ई। 3टारे फ्रांस और अर्जेंटीना। संध्या 5टारे बेल्जियम और जापान मध्य टक्कर। आसंता 22 रे न्यूजीलैंड सह क्रॉस ओवर खेलिबो टीम इंडिया। संपूर्ण खबर को आसवा। आज जाजपुर व्यासनगर में 2 दिनिया अंतर्जातीय क्राफ्ट सम्मेलन आज और आसंता काली अनुष्ठित होगाकु थिबा एही सम्मेलन में 16टी देश अंशग्रहण करेंगे। मोट 10टी अधिवेशन अनुष्ठित होब। 20 जन अंतर्जातीय कलाकार भाग नेबे। 100 रु अधिक स्थानीय कारीगर और प्रतिनिधि एवं 50 वक्ता रहिबे। किछि समय पर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एही क्राफ्ट सम्मेलन उद्घाटन करेंगे। विश्वव्यापी जाजपुर हस्तशिल्प और कला प्रदर्शन करने को यही अंतर्जातीय हस्तशिल्प सम्मेलन प्लाटफर्म प्रदान करिबो। जहां एही सम्मेलन आयोजन मूल उद्देश्य यूएनडीपी यूनेस्को यूनिहाबिटाट यूनिसेफ पर विश्वस्तरीय संगठन गुड़िकर विशेषज्ञ और विश्वस्तरीय कलाकार माने इस सम्मेलन में अंशग्रहण करेंगे। राज्य हस्ततंत्र और बयनशिल्प मंत्री रीता साहू, राज्य दक्षता विकास मंत्री प्रीतिरंजन गड़े, यूनेस्को नवादिल्ली क्लस्टर कार्यालय संस्कृति क्षेत्र में मुख्य भाव अधिकारी मंत्री अशोक पंडा प्रमुख जोगदेवे। सम्मेलन में हेबाकु थिबा 10 अधिवेशन में भिन्न भिन्न विषय वस्तु रही। वुमेन एंड क्राफ्ट, क्राफ्ट फ्यूचर, क्राफ्ट एंड कल्चर, क्राफ्ट एंड वेस्ट, क्राफ्ट एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप, क्राफ्ट एंड टूरिज्म भली आहुरी अनेक किछि। राज्य सरकार और जाजपुर जिला प्रशासन मिलित आनुकूल्य रे ए सम्मेलन हेउछे। Thought process of Odia artisans have been, and those crafts who are somehow dying, somehow haven't got recognition globally. Platforms like these 5 6 जो देश जनमानकर वर्चुअली भी पार्टिसिपेट करे
फिजिकली भी आमर सेशन रोचे 20टा इंटरनेशनल आर्टिस्ट अच्छा से फिजिकली रहे आमर जो ओडिशा रे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट मानक अच्छा से भितर रहे और 10टा अलग अलग जो फोकस अच्छी क्राफ्ट रिलेटेड क्राफ्ट सस्टेनेबिलिटी संगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप संगे यूनेस्को कौन रोल रही पारे अर्बन डेवलपमेंट जो हो स्पीड रू से आर्ट रे और क्राफ्ट रे हम केमती बचाई पारबू तो अलग अलग कथा उपर 10 दिन अधिवेशन रहे आमर जो क्लोजिंग सेरेमनी वैलिडेटरी जो फंक्शन रहे से अनुपम खेर जी आसुँच तो वर्तमान आम भावुँ जे अनुसार जमी आम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो विजन अच्छी क्राफ्ट को नेक्स्ट नहीं कि जावाई इट विल बी सक्सेसफुल। आज जाजपुर जो गोटे महान कार्यक्रम होची विशेषकर हस्तशिल्प क्षेत्र में गोटे इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट होची से राज्य सरकार को जिला प्रशासन को समस्त धन्यवाद दूसरी कारण ये आम गौरवर कथा गौरवर विषय जे जाजपुर गोटे ऐतिह्य माटी आप जानते एकदा ये ओडिशार राजधानी जो आप देखिए अनेक मठ मंदिर अच्छी अनेक क्राफ्ट मैन ये अच्छा बुणाकर मैंने अच्छा ये 10 रु अधिक प्रकार आपंकर हस्तशिल्प लोक मैंने प्राक्ट कर 1700 रु ऊर्ध बुणाकर केवल गोपालपुर गाँव में अच्छा तेणु ये गोटे बहुत बड़ कथा हूँ जाजपुर माटी रे एवं ये जो इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट जो होची देश विदेश लोक मैंने यूनेस्को इनवॉल्वमेंट रोचे। राज्य सरकार को धन्यवाद देवी जे एमती एक कार्यक्रम से आयोजन कर 16टा देश प्रतिनिधि अच्छी इनवल्व होती कार्यक्रम सेटा मुख्यतः जाजपुर जिलार हस्ततंत्र और हस्तशिल्पर विकास पाई ये कार्यक्रम आयोजन करा जायछि जे कृषि परे जदि कारीगरीटा को मुख्यतः मानव समाज ये ग्रहण करिछि ओडिशा रे कहतु बा भारतवर्ष रे कहतु तो आपको विकास करने राज्य सरकार जो प्रचेषा से राज्य सरकार को धन्यवाद देवी। आज ये जो क्राफ्ट मेलाटी होची जो 2 दिनिया मेला रे आम को सामिल करिसंती तो एथिरे आमे माने भी बहुत उपकार पाइबु एवं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देवी जे जहाँ भी करूचंती हमर हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम पाई तो ये हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम आहुरी आगु को जाऊ आमे माने भी आहुरी आगु को जाऊ ये जो प्रोत्साहन आम मन को दौरान से बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी। चिन्मय महापात्र रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होती चिन्मय कौन देखुं वर्तमान कार्यक्रम मुख्यमंत्री जो इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट को अंतर्जातीय हस्तशिल्प सम्मेलन को उद्घाटन करेंगे भाव में आप जानते पढ़ार मूल लक्ष्य हूँ जो भाव में ओडिशा को हस्तशिल्प ग्लोबल ब्रांड करने आमर जो मैंने कारीगरी मैंने अच्छा जो मैंने शिल्पी अच्छा आप जानते जमीक कि हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम एगुड़ाकर कि भाव में विश्व दरबार आहरी आदित्य हम से नहीं कि मुख्यमंत्री सब प्रचेषा कर कारीगर मान सब बुणाकार मान सब प्रोत्साहन राज्य सरकार जोगे दिखाई जो कि 2 दिनिया क्राफ्ट सम्मेलन होती देखिए भारत मोट 16टी देशर प्रतिनिधि देखिए भारत सहित 16टी देशर प्रतिनिधि सामिल हे 20टी आंतर्जातिक दल सामिल होती 50 रु ऊर्ध्व वक्ता जो माने कि सहित जो मैंने हस्तशिल्प जो मैंने काम कर कारीगर मैंने सामिल होती जाजपुर विशेषकर स्थानीय अंचल स्थानीय अंचल कारीगरी और कला संस्कृति कि भाव में आहरी अधिक प्रचार प्रसार हम और से अधिक चेष्टा ये जो 2 दिनिया जो सम्मेलन होती फोकस कर बर्तमान जो सम्मेलन में आप देखते मंचासीन रही मंत्री अशोक चंद्र पंडा मंत्री प्रीतिरंजन घड़ाई मंत्री रीता साहू जाजपुर जिलापाल और जिया मिर्जा समेत अनेक जो मैंने 16टी देशर प्रतिनिधि मान सामिल होती 100टी रु अधिक लोकल कलाकार मान सामिल होती जो सम्मेलन देखिए 2 दिन समय आज प्रथम दिन 2टी पर्यायर 10टी सम्मेलन कर मुख्यतः जमी जाजपुर जमी सुप्रसिद्ध रही जाजपुर ऐतिह्य कला संस्कृति जो प्रसिद्ध अच्छी तेणु विश्वव्यापी कि भाव में जाजपुर गोटे बार्ता जीव हस्तशिल्प और कला प्रदर्शन क्षेत्र में केमी ओडिशा गोटे प्लाटफर्म ओडिशा गोटे ब्रांड से कथार प्रचार प्रसार जेहेतु बर्तमान कि समय पर मुख्यमंत्री आपको विधिवत भाव में उद्घाटन करेंगे से बर्तमान जो देखिए जे विभाग जो मंत्री रही रीता साहू और ग्राम्य उन्नयन और दक्षता विकास मंत्री प्रीति रंजन घड़ाई एम समस्त रही 20-21 धरी 2 दिन धरिकी ये सम्मेलन कर आज सम्मेलन कार्यक्रम आज दिन कौन रही चिन्मय देखो आज जो देखिए जो जाजपुर रोड स्थित जजाति कोटेहाट ये जो होटेल में होची जो सम्मेलन रोचे जो सम्मेलन में मुख्यतः आज जो मैंने प्रतिनिधि मैंने जो मैंने सामिल होती मुख्यतः कहे कि देश से हस्तशिल्प हस्त कारीगर
ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ ଏଗୁଡାକର କେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଯୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଧିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଲିସି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଥିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପଲିସି 2019 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବେ 2022 ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପଲିସି 2022 କୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ରହୁଛି ଯେ ପର କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନକମ୍ ଟାକୁ କେମିତି ବଢାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ମହିଳାମାନେ କେମିତି ବେଳେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ରହିବ। ମହିଳା କାରିଗରୀ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚାହିଦା ବଢିବ ସେ ସବୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଏହି କ୍ରାଫ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରାଫ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀର शुभारंभ करेंगे। जाजपुर व्यासनगर ए 2 दिनिया अंतर्जातीय क्राफ्ट सम्मेलन मुख्यमंत्री जोगदे भर्चुआल मुख्यमंत्री जोगदे सम्मेलन शुभारंभ होउछि। कार्यक्रम आरंभ होइछि। मोट 10टी अधिवेशन रहिबो। ई सम्मेलन में 16 देश अंशग्रहण करेंगे। 20 जन अंतर्जातीय कलाकार भाग नेबे। 100 रु अधिक स्थानीय कारीगर प्रतिनिधि एवं 50 वक्ता एथिरे रहिबे। ते मुख्यमंत्री जोगदे भर्चुआल यार उद्घाटन करने collectives, tourism development organizations to develop the craft and tourism ecosystem in Jajpur. I would also like to take this opportunity and announce a few firsts. We are delighted to partner with UNESCO to uplift our intangible cultural heritage. We are also entering into partnership with Google Art and Culture, which will showcase our cultural asset to the world in an accessible digital format, first of its kind for any district in the country. UN Habitat has been instrumental in helping the administration establish a global advisory board through which the district will interact with cities, sister cities across 5 continents. We are also on our way for becoming the first district in the country to have UNESCO Green Academies, which will be there in 3 schools in Jajpur. Lastly, launching our new logo separately designed for craft and tourism will boost our efforts in branding and marketing linkages. I'm sure that the next 2 days will prove to be thought-provoking and will lead to many productive conversations. I'm hopeful that these learnings will translate into long-term actions and help us build a strong, vibrant craft ecosystem in Jajpur and Odisha. Thank you once again. Bande Utkal Janma. Thank you. Thank you very much, sir, for those overwhelming words of welcome. We have with us Honourable Minister of Handlooms, Textiles and Handicraft, Srimati Rita Sahu. I request you, ma'am, to please share your thoughts with us. जाजपुर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित अंतर्जातिक शिल्प बैठक में उपस्थित आज मुख्य अतिथि आमर समस्त प्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक, मंचासीन माननीय मंत्री विज्ञान और कारीगरी सरकारी उद्योग सामाजिक सुरक्षा भिन्नक्षम ग्राम्य दक्षता विकास वैषयिक शिक्षा श्रीयुक्त पृथ्वीरंजन घड़ई, मुख्य संस्कृति क्षेत्र यूनेस्को अधिकारी श्रीमती रुन्ही जिलापाल जाजपुर, एठारे उपस्थित समस्त अधिकारी और अन्य निमंत्रित अतिथि समस्त को मोर नमस्कार। माँ विरजा कृपार समस्त मोर आज शुभकामना करुचे। आज प्राचीन ओडिशार कला संस्कृतिर केन्द्र जाजपुर ठारे अंतर्जातीय क्राफ्ट समिट अनुष्ठित होइछि। इतिहास मकसाक्षी भाव एठारे विरजा मंदिर, भगवान बराह मंदिर, दशाश्वमेध घाट, जगन्नाथ मंदिर, त्रिलोचन मंदिर, रत्नगिरी, उदयगिरी देश विदेशर पर्यटक मानक आकर्षित करथाय। जाजपुर नाभिगया पीठरे पिंडदान, दशाश्वमेध घाटरे अस्थि विसर्जन पर देश विदेशर लोक आसी थांती। विभिन्न कलार गंताघाट जाजपुर जिला संस्कृतिर प्राणकेन्द्र। एठारे
ବସ୍ତୁକଳା ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ଓ ହସ୍ତତନ୍ତର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥାଏ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯାଜପୁର ଭାଷାର କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ। ଯାଜପୁର ଏକ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଭାବେ ପରିଗଣିତ। ଯାଜପୁର ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ତୀର୍ଥର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ କ୍ଷେତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ସମାନ ଦୂରତାରେ ଆମେ ଶୈବପୀଠ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉତ୍ପର ମୂର୍ତ୍ତିକାର ସମ୍ଭାର ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତାରେ ଭରପୁର ଅନେକ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଯାଜପୁର। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ରାଜ୍ୟ। ଆମ ରାଜ୍ୟର କଳା କାରିଗରୀ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ, କଟକର ତାରକସି, ରଘୁରାଜପୁରର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ପୁରୀର ପଥର ଖୋଦେଇ ଭଳି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 51ଟି ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, କୋଣାର୍କ ପଥର ଖୋଦେଇ, ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ମିଳିସାରିଛି। କଟକର ତାରକସି, ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରାସ୍ ଓ ମେଟାଲ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାସ୍, ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ବ୍ରାସ୍ ପିସ୍, ବରପାଲି ଟେରାକୋଟା ରୁଫ୍ ଟାଇଲ୍ସର ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁରର ଶୁଖୁଆପଦା କ୍ରାଫ୍ଟ ପକେଟରେ ପଥର ଖୋଦେଇ କ୍ରାଫ୍ଟ, ଗଡ଼ମଧୁପୁରର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ରାସ୍, ବୈଦରାଜପୁରର ବ୍ରାସ୍ ଓ ବେଲ୍ ମେଟାଲ କ୍ରାଫ୍ଟ ଭଳି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରାଫ୍ଟ ପକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଆମ ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ଆଜି ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ବଜାର ସହାୟତା, ଶିଳ୍ପୀ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା, ୱାର୍କସେଟ୍ କମ୍ ହାଉସିଂ ନିର୍ମାଣ, କାରିଗରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ମେଳାର ଆୟୋଜନ, ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନୀତିରେ ପ୍ରଣୟନ, ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଟିସାନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପଲିସି ସହିତ କ୍ରାଫ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କ୍ରାଫ୍ଟ ଭିଲେଜ୍, କମନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ହସ୍ତତନ୍ତ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସହିତ ସମତାଳରେ ଆମର କ୍ରାଫ୍ଟ ପରମ୍ପରା ଗତି କରୁଛି। ଏହି ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଶିଳ୍ପୀ କଳାକାର କାରିଗରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଐତିହ୍ୟର ସୂତ୍ରଧାର। ସେମାନଙ୍କ କୃତି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଆମକୁ ନୂତନ ପରିଚିତ ଆଣିଦେଇଛି। ଏହି ପରିଚିତ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ଭରସା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। धन्यवाद माननीय मंत्री श्रीमती रीता साहू महोदय। आपणकर शब्द आमको प्रोत्साहित कर भविष्य में आहरी एभली अनेक कार्यक्रम आयोजन करने। We have with us Honorable Minister, Rural Development, Skill Development and Technical Education, Shri Priti Ranjan Ghade. May I request you, sir, to please address the gathering. Namaskar, Jai Ma Viraja. At the outset, I would like to express my sincere gratitude to Honorable Chief Minister of Odisha, Sri Naveen Patnaik ji, for inaugurating this international ICSJ 2023, Craft Summit 2023. His leadership is a constant source of our motivation. I would like to extend my gratitude to all the guests for their august presence. Today present over here is also Panda and Rita Sahu. My dear friends, Jajpur, the ancient capital of Odisha, is home to several exquisite handicrafts and handlooms. There are more than 3,200 artisans involved in very popular Tussar handloom, which has a high national and global demand. These artisans manufacture one of the finest Tussar silk products in the entire country. I represent Sukinda as a member of Legislative Assembly. The Tussar silkworms in Sukinda, which produce the finest yarns, are very sensitive to environmental variations. In recent days, considering the erratic nature of the climate, we have taken steps for the preservation of the indigenous Sukinda eco-race breed. Very recently, we have achieved surplus production of disease-free laying
from 0 to 1,28,000 and supplied to other districts and states like Jharkhand. And in this year, we have increased our cocoon production over six-fold from 3 lakhs to 20 lakhs. To give Sukinda eco-race, tussar and identity and to enhance the livelihoods of the tussar weavers and rearers, we are at the age of introducing a dedicated tussar corridor in Sukinda, which will be Asia's largest tussar corridor, thanks to Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik ji. Not just limited to tussar, there are enormous number of artisans involved in various handicrafts like stone craft, wood crafts, bamboo crafts, metal crafts and golden grass products. I have seen these products manufactured by our artisans personally, and I was amazed by the skill set of these artisans who adds fineness to the very details. These products are at the finest level. One would love to keep these products in the house for a very long time. Odisha is one of the largest suppliers of skilled manpower in the country. We are having the brand Skilled in Odisha. Thanks to Honorable Chief Minister. Give a very big round of applause for Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik ji. Today, entire nation is dependent on our skilled manpower. If you go to any state in India, you will find someone from Odisha working there in high-skilled jobs. In recent days, we are seeing a demand for skilled manpower available for the handicraft and handloom sector. Under the leadership of Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik, the department I am heading has preserved our indigenous skills in handlooms and handicrafts and to provide an attractive remuneration which they deserve for their skill set. We are providing several skill upgradation programs specifically designed for the handloom and handicraft sectors. We are also insensitizing these training programs for higher retention of the trainees. For attractive revenue generation, the artisans are being provided with market linkages and corporate collaborations, and several infrastructures are being dedicated to them for their use. Further, credit facilities are being ensured to every artisan so that no one stops in between due to lack of funds. I feel privileged and honored to be a part of this journey towards uplifting the artisans. The occasion affords us the opportunity to reflect collectively on the current involvement of youth in the handloom and handicraft sector. The progress that we have made in implementing practical programs, strategies and policies to empower the youth in this state and how to participate more meaningfully in the economic development of the country. Thank you very much. Bande Utkal Janani. Thank you very much, sir, for setting the context and for those extremely encouraging words. I request Madam Junhi Han, Chief of Culture Sector UNESCO, New Delhi Cluster Office for Bangladesh, Bhutan, Maldives, India, Nepal and Sri Lanka to please share her thoughts with us. Naveen Patnaik, Honorable Chief Minister of Odisha, Shrimati Vita Sahu, Honorable Minister of State, Handloom, Textile and Handicraft, Shri Prithviranjan Gare, Honorable Minister of Rural Development, Shri Ashok Chandra, Honorable Minister of Science and Technology, Shri Chakrabarti Singh Rathore, Collector and District Magistrate, respected dignitaries, distinguished guests, and esteemed UN colleagues. A very good morning to all of you. At the very onset, I'd like to offer UNESCO's warm congratulations to the District Administration of Jajpur and the Government of Odisha for organizing this fourth edition of International Craft Summit that aims to leverage creativity for sustainable urban development by bringing together various stakeholders in the craft sector for knowledge exchange and deliberate on the future of craft of India. This international summit on craft is actually curated surrounding two themes. One is about craft, the other about the cities, both of which always have been one of the most important pillars of UNESCO Culture Sector's program since its inception
under the overarching themes of heritage and creativity. In recent times, cities have become one of the most important players for achieving 2030 Sustainable Development Goals. This is only natural, taking into account that today, some 56% of the world population, which is 4.4 billion inhabitants, live in urban areas. But this trend is expected to continue, with the urban population more than doubling its current size by 2050, at which point nearly 7 of 10 people will live in cities globally. Today, cities occupy approximately 2% of the total land in the globe. However, they produce 70% of the global GDP, make over 60% of global energy consumption. They are also responsible for 70% of greenhouse gas emission and produce 70% of global waste. These figures are frightening. It is understandable that the Sustainable Development Goals 11 refers exclusively and specifically to cities, making cities inclusive, safe, resilient, and sustainable. UNESCO is committed to strengthen the sustainability of cities through policy advice, technical assistance, and capacity building, drawing on its long-standing normative and operational experience. Especially in the field of culture sector, there are 2 distinguished programs dedicated to cities, namely UNESCO's Creative Cities Network and UNESCO's recommendation on historic urban landscape. Because UNESCO considers urban heritage, including its tangible and intangible components, constitutes a key resource in enhancing the livability of people of life and fosters economic development and social cohesion in a changing global environment. We would like to draw attention of the government of Odisha to this relatively new instrument, UNESCO Recommendation on Historic Urban Landscape. As Odisha is home for many historic urban areas which are rich and long history and tradition that can be leveraged for sustainable development based on their rich and diverse heritage. UNESCO placed creativity in the heart of sustainable development by launching the UNESCO's Creative Cities program in 2004. The program encourages cities to recognize creativity as a strategic element for sustainable development. By joining the network, cities become UNESCO's official partners to achieve 2030 development goals through craft and folk arts, design, films, gastronomy, literature, media, and music. Currently, there are 7 UNESCO creative cities in India, including Srinagar and Jaipur, as creative cities for craft. UNESCO Creative Cities for Craft strongly encourages its cities not only leverage craft to foster socio-economic development, but also enhance working condition and status of craft people. Given the rich repositories of crafts and folk tradition of India, particularly in Odisha, there is a great potential to explore how craft and folk tradition can facilitate such development along the same lines as the Creative Cities network programs of UNESCO. In the field of intangible cultural heritage, I'd like to share very briefly our flagship projects such as the Rural Crafts and Cultural Hubs in West Bengal,
in partnership with the West Bengal government and to promote intangible cultural heritage for a sustainable and responsible tourism in partnership with Rajasthan. These partnerships have already begun to yield results that span far beyond the realm of economic growth, as these initiatives provide a pride and recognition to those village artists and craftspeople as bearers of India's intangible cultural heritage, which is most crucial for sustainability of those craft and intangible cultural heritage. I am honored and happy to be part of this wonderful summit initiated by the Jajpur district and the government of Odisha. Odisha is home to some great cultural heritage sites such as Konark Sun Temple, which is on the list of UNESCO World Heritage, as well as fascinating intangible cultural heritage such as Patachitra, Sambalpuri textile, Chau Purivat Yatra, and Tussar silk handlooms, and the list goes on. Last but not least, I'd like to take this opportunity to thank the district of Jajpur and the government of Odisha for extending its invitation to UNESCO New Delhi to develop a series of cultural and craft villages that practice intangible cultural heritage across its district of Jajpur. We are envisioning an ecosystem-based approach for their holistic development. Ultimately, the impact of such project, as stated earlier, should go far beyond its economic growth here in Jajpur district. The upcoming sessions and discussion include some crucial topics to strengthen the craft sector of India and build its resilience. Once again, UNESCO New Delhi extends its warm congratulations to Jajpur and the government of Odisha for this wonderful initiative. Thank you, Dhanyavad. Thank you so much, Madam Junhi Han. We would like to congratulate UNESCO family for all the outstanding work in promoting and preserving art and craft around the globe. And thank you for all the good words about Government of Odisha. That means so much to us. We have the presence of Honorable Minister, Science and Technology, Public Enterprises, Social Security and Empowerment of Persons with Disability, Shri Ashok Chandra Pandaji. May I request you, sir, to please address the gathering. At the outset, I must thank profusely our Honorable Chief Minister, Sri Naveen Patnaik, for facilitating and also his blessing for this international craft summit here at Jajpur, Vyasanagar, and Deputy Secretary also, and on dais with me the dignitaries, Srimati Dia Mirza, UNICEF's Delhi head, Srimati Yui Han, Chief of Culture, Honorable Minister Sri Pitaranjan Gadai, Honorable Minister Srimati Rita Saum, and the delegates of the dais, friends from media. It gives me immense pleasure, before I specifically keep few words, at the outset, I must not forget that our beloved Chief Minister, Sri Naveen Patnaik ji, is a great lover of art and craft. He is one of the founding members of the INTACT. He is the person who conceptualized Kala Bhumi nearer to Khandagiri, Udayagiri Hills,
in Ekamra constituency. He is the Chief Minister who has a love for the artist. That's why every year on 2nd, 3rd and April in Bhubaneswar, we go for a Department of Culture, holds folk artist, folk dance programs in state capital. Thousands of artists participate in that. And I won't forget to mention here his love for artists particularly, because he is the person who sanctioned 50,000 artist pension in Odisha. And also, in all the 30 districts of Odisha, the district cultural centers or functions started. And you'll be happy to know that I will draw the attention of UNICEF Cultural Center Chief here, that the Jagannath Sadak, where earlier the pilgrims used to come from Bengal for the car festivals, and also the temples, architectures, the remnants in the 480 kilometers of coast in Odisha, coastline in Odisha, suggested for their classification and, if possible, digitize that and also advise Department of Culture to go for it. In this regard, I will also draw the attention of UNICEF cultural head to help us. But Jaspur, where we are all assembled here, has a uniqueness. It is a unique district in the sense it was the ancient capital of the Bhaumakars and Somavansha dynasty kings, both Jajati Kesari, who had his capital here, and also the land of reigning deity, Ma Biraja, symbolic of Shakti cult. Also, we find the great remnants of Ratnagiri, Lalitagiri, Udayagiri, all Buddhist lands. It's a uniqueness. It's a district where, apart from the handicraft which Engineer Pithiranjan Gadge, Honorable Minister, has mentioned about the tussar and other things, I must say it is the district where the religious tolerance has been manifested. If we see the Buddhist and you also see the Mahabhiraja and other forms of the religious followers, then it's a district which is praiseworthy because of the religious tolerance. And not only that, this districts also other side, it is where the industries have made a lot of progress in Kalinganagar. And one of the Baraputra, the sons of the Sovereign Biju Patnaik, also thought about the Kalinganagar, the industrial setup in the other side of the districts. And this side also, the all historical and uniqueness, whether it is Doswasameda Ghata of river Baitarini, which is very pious. Similarly, Nabi Gaya, where Hindus used to come and offer the Sradhas. So these are the uniqueness. And here, recently, Mr. Gadge also referred to that, the silk industry, Tussar. I also went to that place, and many other things. And if you go beyond these districts, the Odisha has always been. It's a plethora of milestone of heritage camps that attracts people worldwide. And mostly, you will see that one of the oldest and most popular art form of Odisha, Odissi Patachitra, is the traditional painting. Similarly, as Madam Minister Rita Sahu was saying, the Katak silver filigree and the applique work of Pipli. And it is the palm leaf paintings, manuscript, handlooms, textiles. The madam, she hails from that side, Sambalpur and Bagat side, and also Kotpad. All these where you find the beautiful tie and dye method for the beautiful Sambalpur saris and others. Similarly, the Sora paintings, our tribals, they have also uniqueness. So also
the metal works of Balakati nearer to Bhubaneswar and Terracotta. And particularly the handloom policy of 2019 also approved by state government and CM has the blessing for it. And it has been decided by the government to make SIDA, is the State Institute for Development of Art and Craft, as a center of excellence. And two more points, I would request the UNESCO chief here, the cultural chief, a suggestion. Please extend your help. In particular, we have a lot of art and architecture in the coastline. Because it is in the process, we must conserve it for the future generations. And we need your support also. And since the Honorable Chief Minister is a lover of art and also all of us all the support for it, and definitely will do that. And Jagannath Sarak also have mentioned that. So in the process, I must say, this district deserves this summit because it has the diverse artistic achievements. I thank district administration and others also for giving me opportunity for attending this and giving me opportunity to speak to you once. Thank you all again. Bande Uttar Janata. Thank you very much, Honorable Minister Shipanda, for sharing with us the artistic diversity of the land and also sharing your thoughtful insights with us. It's worth mentioning here that the District Administration of Jajpur organized a competition of logo making. We got more than 50 entries from the most prestigious design institutes of the country, and the jury have declared Dipanshi Varshniya from School of Planning and Architecture, Bhopal, as the winner for Jajpur Tourism logo, and Astha Jindal from National Institute of Fashion Designing, Kangra, as the winner for Jajpur Crafts logo. And I request Honorable Chief Minister Odisha, Shri Naveen Patnaik ji, to do the honor of launching these logos, please. Ladies and gentlemen, a moment of absolute pride and glory as Honorable Chief Minister Odisha launches the logo of Jajpur Craft and Jajpur Tourism. This is Jajpur rising, shining when it comes to tourism and craft, and this International Craft Summit says it all. Thank you so much, sir, for doing the honor. Jajpur feels absolutely privileged. And I request Honorable Chief Minister Odisha to please honor us with his address. मान्यवर मंत्रीगण, Chief of Culture, Secretary UNESCO, Ms. Han, eminent actress Dia Mirza, ladies and gentlemen, ebong bandhugan, समस्तों नमस्कार। माँ बिरजा का क्षेत्र इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट उद्घाटन करी मु बहुत खुशी। जाजपुर शक्तिपीठ एवं बौद्ध धर्मर मध्य एक प्रमुख क्षेत्र थिला। यार प्रभाव जाजपुर कला संस्कृति और परंपरा उपरे मध्य रही। I welcome you all to International Craft Summit in Jajpur. It is a historic occasion for Odisha. This is the first of its kind craft summit featuring a confluence of pioneering craftspeople, culture, and art enthusiasts. Jajpur was the capital of ancient Odisha, with its existing assets of religious tourism, urban tourism, and Buddhist tourism. It has the potential to be a major tourist hub.
The cultural heritage of Jajpur is reflected in its vibrant art forms. It is heartening to see that today we have representatives from over 15 countries attending the summit and engaging with the local artisans and other stakeholders. I welcome all the foreign delegates to Odisha. I am told that 4 UN agencies and 5 UNESCO creative cities have partnered with the district to realize this ambitious and forward-looking event on behalf of the state government. I thank all our partners. Odisha is an illustrious land of immaculate art and crafts. Our civilizational journey is a journey of our artistic culture. The artistic skills of our craftsmen are reflected in numerous ways. You can find it in our temples, our sculptures, Buddhist shrines, and woven clothes, patta paintings, work, filigree, horn and metal work, everywhere. Every village, every lane of Odisha exhibits some form of art or craft. The soul of Odisha lives in its art, craft, music and culture. The government of Odisha is making concerted efforts to develop Odisha as a global hotspot of tourists, provide livelihoods and employment opportunities, and make the state attractive for investors. We are developing mechanisms for a holistic development of our tourism, handloom and handicraft sector. We put in place various policies such as state tourism policy, handicraft policy, apparel and technical textiles policy. We are also opening art galleries at different places, organizing heritage walks, and taking many other initiatives to promote tourism and culture. Our Kalami Art Museum is a class by itself. I congratulate the district administration for organizing this craft summit. Wish a very happy and fruitful and engaging conversations. Thank you. Bande Utkal Jal. Thank you very much, sir, for honouring us with those words of wisdom. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Honourable Chief Minister Odisha, Shri Naveen Patnaik, declared the best Chief Minister of the nation for the 5th consecutive time, and one man whose only mission and vision is to make Odisha a global name. Thank you so much, sir. I now request CDO cum EO Zilla Parishad Jajpur, Shri Ashok Kumar Veoria, to please propose vote of thanks. On behalf of Government of Odisha, I would like to thank Honorable Chief Minister Sir, Honorable Minister for Handlooms, Textiles and Handicrafts, Honorable Minister for Rural Development, Skill Development and Technical Education, Honorable Minister for Science and Technology, Public Enterprises, Social Security and Empowerment of Persons with Disability, Madam Dia Mirza, Artist and UN Goodwill Ambassador, Madam Juni Han, Chief of Culture Sector, UNESCO, and all the delegates, partners, artists, media and officials for being a part of this first International Craft Summit which is being hosted in Jajpur. Bande Utkal Janani. Thank you everyone for your presence and participation in making the inaugural section a grand success.
Thank you. With this, we wind up the session. We are starting the next session shortly. जाजपुर व्यासनगर में 2 दिनिया अंतर्जातीय क्राफ्ट सम्मेलन उद्घाटन करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज एवं आसंता काली अनुष्ठित हेबो एही सम्मेलनी 2 दिनिया सम्मेलनी 16टी देश एथिरे अंश ग्रहण करुछंती मोट 10टी अधिवेशन एथिरे रहिछि 20 जन अंतर्जातीय कलाकार एथिरे भाग नेउछंती 100 रु अधिक स्थानीय कारीगर प्रतिनिधि एवं 50 वक्ता एथिरे रहिबे किछि समय परे जहा थिला समय मुख्यमंत्री उद्घाटन कर सारी ए सम्मेलन को विश्वव्यापी जाजपुर हस्तशिल्प एवं कला प्रदर्शन करने को ए अंतर्जातीय हस्तशिल्प सम्मेलन प्लाटफर्म प्रदान करिबो जहा ए सम्मेलन आयोजन मूल उद्देश्य रहुछे। तेबे विश्वस्तरीय संगठन गुड़िकर विशेषज्ञ एवं विश्वस्तरीय कलाकार माने सम्मेलन में अंशग्रहण करिसेंती। राज्य हस्ततंत्र बयनशिल्प मंत्री रीता साहू उपस्थित रही। राज्य दक्षता विकास मंत्री प्रीतिरंजन घड़ाई यूनेस्को नयादिल्ली क्लस्टर कार्यालय संस्कृति क्षेत्र में मुख्य भाव अधिकारी मंत्री अशोक पंडा उपस्थित रही। सम्मेलन में 10टी अधिवेशन भिन्न भिन्न विषय वस्तु रही। चिन्मय महापात्र आम सहित सीधासलख जोड़ी होती रिपोर्टर चिन्मय आरंभ हो जाइए मुख्यमंत्री यार उद्घाटन करिसेंती। निर्वाचन मंडल करा सीधा सड़ा जो भाव आज प्रथम थर पर जमी क्राफ्ट समिट करा आपण निर्वाचन मंडल में एवं जो कथा आप कहते टसर कॉरिडोर ठारू ओडिशा होची बाले कला संस्कृति ऐतिह्य और आमर जो शिल्पी तार जो भाव गोटे समन्वय रही जाजपुर गोटे स्वतंत्र रही बौद्ध कीर्तिराज रही शक्तिपीठ माँ विरजा रही रत्नगिरी उदयगिरी सब रही। धन्यवाद जनइबा माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को कला संस्कृति ऐतिह्य परंपरा को बजाय रखापी आउरी दीपाद आगू को नापी आउरी प्रोत्साहन बढ़ावाई गोटे पाखरे देखुंट सारा राज्य आज दुलुकुची आज वर्ल्ड कप हॉकी रे मेगा इवेंट रे सारा विश्व आज अनईची सारा विश्व देखुची वर्ल्ड कप हॉकी ओडिशा रे भुवनेश्वर और राउरकेला रे अनुष्ठित होउची जेतेबेले मेगा इवेंट होउची जेतेबेले स्पोर्ट्स क्षेत्र रे सेही तारी पाखरे वर्तमान आउ गोटे मेगा इवेंट इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट आज कला संस्कृति ऐतिह्य परंपरा को बजाय रखापी ये अंचलर माँ विरजा माटी रे ये अंचल जो भाव में बौद्ध कीर्ति रही समस्त आर्टिसन्स हैंडीक्राफ्ट्स जो भाव रही विशेषकर आज टसर सिल्क जो भाव में प्रोडक्शन आहरी बढ़ुची ये टसर सिल्क सारा विश्व बजार में आहरी तार चाहिदा रही कि भाव में सबु क्षेत्र में यार केमी आहरी अधिक अधिक आमर आर्टिसन्स क्राफ्ट्समैन माने आउरी उपकृत हो पारे तांकर सम्मान बढ़िबो ये गोटे आज निश्चिंत भाव में ये समस्त आर्टिसन्स मान को ये आउरी एनकरेज करिबो आगामी दिन में मोटिवेट करिबो तांकर कार्यक्रम को आगे नबा पई एवं तांकर जो इंडिजिनस स्किल्स जो रही ताकू ही मध्य स्किल डेवलपमेंट माध्यम रे आउरी तांको हाई स्किल्ड करेबा आउरी तांको भीतर फाइननेस तांकर आनिबा तांको किबळी भाव रे सारा विश्व रे ये वर्तमान ओडिशा एभली वर्तमान गोटे हैपनिंग प्लेस खाली भारत वर्ष रे नो एंटायर वर्ल्ड रे वर्तमान ना इंटरनेशनल इवेंट सब वर्तमान ओडिशा माटी रे आज देखुछन जाजपुर व्यासनगर माटी रे आज इंटरनेशनल इवेंट आज देखुछन इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप हॉकी सुंदरगढ़ रे ये आज गोटे हैपनिंग प्लेस इन द एंटायर वर्ल्ड आज स्पोर्ट्स कोंतु आज गोटे पाखरे गोटे इंडस्ट्रियलाइजेशन आज कलिंगनगर इंडस्ट्री आज रही सारा विश्व आज निर्भर करिछि आज स्टील प्रोडक्शन आज कलिंगनगर पर निर्भर करिछि सारा विश्व रे आवश्यकता रही स्टील आज कलिंगनगर तक उत्पादन करिक दउछि तेणुक ये गोटे रिलीजियन टूरिज्म कथा कहते रिलीजियस टूरिज्म कथा कहतु आज इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस कथा कहतु आज क्राफ्ट्समैन हैंडीक्राफ्ट्स कथा कहतु सब क्षेत्र में आज गोटे इनक्लूसिव डेवलपमेंट पाई गोटे सबु क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज सबु क्षेत्र में कार्यक्रम को आगे नहीं आज सारा भारत वर्ष रे आज 1 नंबर मुख्यमंत्री भाव में आज जो भाव में प्रतिष्ठित होती सारा विश्व आज सम्मान दौर माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जानते आम बुणाकार मान टसर शिल्प जो कथा आप कहते बुणाकार तारकसी काम विभिन्न पथल शिल्पी पिपिल चांदुआई आम अनेक समय राज्य सरकार हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम पॉलिसी आनी 2019 आनी 22 आने अनेक गुड़े परिवर्तन अच्छे प्रोत्साहन राशि दि जाऊँगी किभली भाव में जमी ओडिशार जो रही हैंडलूम हैंडक्राफ्ट जमी ब्रांडटा पूरा विश्व में आहरी चमक
से नहीं कि गोटे पर गोटे प्रयास करा गोटे पटे नुआ ओडिशा सशक्त ओडिशा आ गोटे अन्य पटे क्राफ्ट समिट ये बर्तमान सशक्त ओडिशा दिगरे जेभली भाव में कार्यक्रम को आगे नहीं कहली ये गोटे सबु क्षेत्र में आज स्पोर्ट्स टू स्टिल आज ये गोटे रिलीजियन टूरिज्म टू आरंभ करके आज आर्टिसन क्राफ्ट्समैन हैंडीक्राफ्ट्स मान ये सबु क्षेत्र में ये कहली एक्रॉस बर्तमान सबु क्षेत्र में आज समस्त सबु वर्गर लोक आज जेभली भाव में फील्ड रे निज निज फील्ड रे से माने केमिति आज बेस्ट करि परिबे एंटायर वर्ल्ड रे आज नंबर 1 हे परिबे ये गोटे प्लेटफॉर्म आज माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सबु वर्गर लोक मानक पई जहाँ भीतर टैलेंट अच्छी समस्तक पई आज माननीय मुख्यमंत्री गोटे प्लेटफॉर्म आज देइछन तेणु करी ये गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप ये आज आखि खोली देइछि ये अनेक नूतन आज के दिन रे हैंडीक्राफ्ट्स आर्टिसन सबु वर्गर लोक मानक पई ये गोटे बहुत बड़ मोटिवेशन आनी छै आज आ गोटे कथा जब देखिए ये जो क्राफ्ट रे मध्य वुमेन मानक पई गोटे स्वतंत्र भाव में अनेक गुड़े कथा करा जाउछि केमिति भाव में आपण जो ग्रामांचल मानक जमी महिला उद्योगी सृष्टि कर राज्य सरकार विभिन्न समय आप जानते मेक इन ओडिशा कार्यक्रम कराउछि मिशन शक्ति जरिया रे कराउछि क्राफ्ट रे मध्य अनेक आम रही जो मैंने कि जाजपुर में बहुत रही से क्षेत्र में अनेक गुड़े कार्यक्रम हाथ में निया तो ऐतिहासिक पदक्षेप आज देखिए आउ सेल्फ हेल्प ग्रुप बर्तमान एथर बर्तमान उद्योगपति स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बर्तमान प्रत्येक पंचायत रे गाँ गाँव केमती उद्योगपति बर्तमान महिला माने ही पारिबे से दिगरे जो पदक्षेप नहीं माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ये आज सारा भारत वर्ष आखि फिटे देछि आज सारा विश्व आज से अनेक बसी कार्यक्रम को ये बर्तमान कार्यक्रम जो भाव में महिला मानक भितर एंटरप्राइजिंग स्किल आउरी बढ़ावा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बढ़ावा ये आज एसएमई जो बर्तमान करने जो निष्पत्ति नहीं सारी कार्यक्रम को आरंभ करिसेंती अर्थ राशि सहयोग देइसेंती स्किलिंग करके भाव में से दिगरे कार्यक्रम करें ए दिगरे जो पदक्षेप नहीं आगामी दिन में ये राज्यर इकोनॉमी को आउरी वाइब्रेंट करिवो ये गोटे शुणुले जहाँ कहते प्रीतिरंजन गड़ाई जे जो भाया भाव में बर्तमान विश्व स्तर में ओडिशा जो भाव में सुनाम अर्जन कर हॉकी टावर आरंभ कर क्राफ्ट समिट मंत्र सबुति सशक्त ओडिशा नुआ ओडिशा एवं मुख्यमंत्री जो भाया नेतृत्व में जो कार्यक्रम कराऊँ सबु क्षेत्र में केमिति महिला युवक समस्त सशक्तकरण कर गुरुत्व होची बर्तमान से प्रोग्राम आप आरंभ हो सीधा स्थल देखुए जो प्रथम सेक्शन होची मो कैमेरा पर्सन सरोज को कहबी से सीधा स्थल देखे बाहर प्रतिनिधि माने समस्ते आसी से सामिल होती एवं अन्य जो मैंने अच्छा आम सीधा सड़क जो मंत्री अच्छा अशोक पंडा सहित आलोचना करवा एवं जो भाव में आम रही सीधा सीधा आलोचना करके सीधा सड़क आम जी आमर अच्छा हस्तशिल्प मंत्री रही जे कि रीता साहू सहित आलोचना करवा मैडम जी देखिए जो भाव में क्राफ्ट समिट करागला एवं आमर जमी कला संस्कृति एवं बुणाकार मान जो प्रोत्साहन कर वर्ग से देखिए कौन कहे आज इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट जाजपुर रे अनुष्ठित होती माननीय मुख्यमंत्री या उद्घाटन कर सांगरे हैंडलूम विभाग मंत्री हिसाब से योगदान देती मो निजक बहुत गर्वित अनुभव करुँची और क्राफ्ट मेलाटा आहरी आगो उन्नतर हो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री का उद्देश्य निर्देश निश्चित भाव में मुझे समर्थन कर मोर विभाग तरफ निश्चित भाव में आगो जो चेष्टा करी आम सहित अच्छा विधायक अशोक बल अच्छा सहित सीधा सड़क आलोचना करवा एवं जो भाव में आप निर्वाचन क्राफ्ट समिट ये प्रथम थर ओडिशा मुख्यमंत्री कहले ओडिशा होची कला संस्कृति ऐतिह्य और कारीगर अनेक गुड़े कार्यक्रम कराऊँच जाजपुर विशेषकर देखिए शक्तिपीठ और बौद्ध धर्मर गोटे क्षेत्र धन्यवाद जनइबू माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक महोदय को ओडिशा रे प्रथम थर पर इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट जाजपुर रे एवं मो निर्वाचन मंडली कोरई व्यासनगर म्युनिसिपालिटी अंचल रे आज उद्घाटन करिसेंती 2 दिन व्यापी ये कार्यक्रम हम अनेक विषय संपर्क में माननीय मुख्यमंत्री अभिभाषण रखिले कला साहित्य संस्कृति पुरातन राजधानी बौद्ध पीठ शक्तिपीठ माँ विरजा क्षेत्र ये सम्मिलित क्षेत्र प्राय ओडिशा रे भिन्न ये अंचलटी ओडिशा भितर भिन्न एवं चिन्मय गोटे सुजोग सृष्टि करिवो जो रही क्राफ्ट सम्मेलन गोटे सुजोग सृष्टि हेबो समस्तक पई
बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय समस्त आलोचना व्यासनगर जाजपुर व्यासनगर चिन्मय आमको सूचना देउथिला। आज अंतर्जातीय क्राफ्ट सम्मेलन आरंभ होउछि 2 दिनिया। आज एवं आसंता काली 16टी देश एथिरे अंशग्रहण करुछथि। समय होइछि बुलेटिन के ठोकिबा। नमस्कार। सह प्रायोजक मु तो बाउजी मो बोर खुशी पे तम झियो हे जीव आईपीएस शिखा पात्र मो बोर इच्छा आज घर को बोटी आसीबो साड़ी मो द्वारा हे परिबनी बाबा ताको घर काम रे सहाय्य करिवो चा तयारी करियो बोली सेटा भी मो द्वारा हे पालानी भिन्नतांक संकल्प भिन्नतांक मन साथी होई बाट चलिबे जिबे दुईटी जीवन मो जीवन साथी सोमवार शनिवार राति 8 रे स्टार किरण रे। I am a world skill champion. I am an automobile expert. We run startups. Industry 4.0 is here. I am a proud mariner. Welding is my passion. We are robotic engineers. Home away from home. CV Raman Global University, Odisha. Home grown.